So let's start the class by congratulating ourselves for the wonderful victory we had yesterday. Right. And now we are going to play New Zealand next Sunday. Because of the match, I didn't really teach yesterday at 3 o'clock, the grammar class. It was cancelled. Yeah. So open your books, everybody. The conversation, the interview with the astronaut. I hope you guys listened. Are you all right? I'm going to play the audio from the beginning. One more time, you guys are going to get the listening practice. Tape script 10.8. Alexa, raise the An volume. interview with an astronaut. Soichi, what exactly is your job? Repeat. Soichi, what exactly is your job? What exactly is your job? Soichi, what exactly is your job? An aeronautical engineer. I am an aeronautical engineer. So the question was, what exactly is your job? You are an astronaut. I understand. What exactly is your job? Anyone who goes into space becomes an astronaut. But before they go into space, they have a job on Earth as well, right? They can be doctors, they can be engineers, they can be teachers, right? Someday, who knows? Mera number bhi aayega. Okay, my turn will also come, and then I will also go into space with body or without body. That's the question. That's the question. And I'm a JAXA astronaut. And I am a JAXA astronaut. What is JAXA? What is JAXA? JAXA is the Japan Aerospace Exploration Agency. JAXA is the Japan Aerospace Exploration Agency. Exploration comes from the verb explore. Translate, translation. Attract, explore, exploration. Okay. What did you study at university? Well, I studied engineering, of course. Aeronautical engineering. Aeronautical engineering. Where did you study? Which university? I studied at the University of Tokyo, and I graduated in 1991. At University of Tokyo, I graduated in... Which part of Japan are you from? Which part of Japan are you from? Which part of Japan are you from? I'm from Yokohama, Kanagawa. Okay, it doesn't matter what you said. Okay, it is just the name of the part of Tokyo. Which is part of Tokyo. Which is part of
Just like Mumbai is a city, Tokyo is a city. Mumbai has areas like Andheri, Juhu, Bandra. Similarly, Tokyo is a city and Tokyo has parts like Yokohama, Kanagawa. Okay. चलिए मैं थोड़ा ही बात कर लूं श्रेया से। श्रेया, क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग क्या कर रहे हैं? बिंदास बात करो, कोई टेंशन नहीं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम ये क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? कुछ प्ले कर रहे हैं और ये लोग रिपीट कर रहे हैं, है ना? आप रिपीट कर पा रही हैं जो सुन रही हैं अभी? नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगी। हो रही है? हाँ, लेकिन आपने हाँ बोल दिया था, आप रिपीट कर पा रहे उसमें भी, और मुश्किल हो रही है उसमें भी। स्विच इट ऑफ प्लीज। तो जो हो रहा है होने दी, आप उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, जितना हो सकता है उतना शामिल हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे शामिल, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें नहीं समझ आएंगी, कोई बात नहीं। जस्ट डू व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। एवरीथिंग इज ऑन मी आफ्टर दैट। ओके? Are you married? आपको क्या लेना देना इस बात से हम मैरिड हैं कि नहीं? आप क्यों पूछ रहे हो उल्टा पुल्टा सवाल? तो यार, आप क्यों पूछ रही है ये सब बात हमसे? आपको इंटरेस्ट है हमें, तो फिर क्यों पूछ रही है आप? छोटी बच्ची है और मेरे से पूछ रही क्या? क्या मतलब है? तो यार, ये सवाल पूछना बनता है तुम्हारा? क्यों पूछे? लुक एट माई वाइफ हेयर हियर। ओके, नॉट हियर, हियर। आई मीन, ये तो हो सकता है फैशन हो, बट दिस इज नॉट फैशन। ओके, ऑलराइट। आर यू मैरिड? Yes, and I have 3 children. यस, एंड आई हैव 3 चिल्ड्रन। इसके लिए भागा है। You now know the reason why he is in space. Shreya, this guy is in space. Okay, हम लोग जिससे बात कर रहे हैं वो क्या है? एक एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट गो इनटू स्पेस। तो पता चला वो क्यों भागा हुआ है, स्पेस में क्यों गया हुआ है? Most people who go into space are married and have children. There is a reason. They are fed up with life here, you know, so they go up in space. कम से कम कुछ तो शांति मिले। Yeah. What do you like doing when What do you like doing when you are you're on Earth? when you are on Earth? What do you like doing when you are on Earth? Well, I guess my hobbies are jogging I guess my hobbies are jogging and and basketball. basketball. And I like skiing and camping with my kids. And I like skiing and camping with my kids. What are you doing on the space station at the moment? What are you doing on the space station at the moment? At the moment. At the moment means abhi, at the moment. What are you doing on the space station at the moment? I'm doing quite a few spacewalks. I'm doing quite a few spacewalks. I'm doing quite a few spacewalks. Right. Quite a few means a small number or big number? Thank you very much. And if you remove quite and only say a few, then a small number. Okay? I'm going out into space and I'm checking the instruments. I'm going out into space and I'm checking the instruments. Which instruments? Instruments which are on the outside of the space station. On the outside of the space station. On the outside of the space station. I'm checking them. To make sure they're working properly. To make sure they are working. To make sure they are working properly. Why did Shreya's mother send her here? To make sure that her English gets better. Her mother sent her here to make sure that her English gets better. Right. You're part of the Russian crew.
You are part of the Russian crew. You are part of the Russian crew. You are part of the 330 batch, right? You are part of the Russian crew. What does this mean? What does this mean? What does this mean? What does this mean? It means that my commander is Oleg Kotov It means my commander is Oleg Kotov from Roscosmos. from Roscosmos. And Roscosmos is the Russian space agency. The Indian space agency is ISRO, right? American space agency is NASA, and Russian space agency is Roscosmos, and Japanese space agency is called JAXA. And I'm working in his team. I'm working in his team. I'm working in his team. कल किसी दिन आगे एक entrance exam में कोई job वगैरह के एग्जाम में कि रशियन स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं, 4 नाम दियो, तो आराम से आप कर दोगे, राइट? और उस दिन आप कहोगे बड़ी फायदा हो गया भाई, वाह, राइट? गए थे इंग्लिश सीखने, जीके भी सीख गए. We're studying weather conditions. We are studying weather conditions. We are studying weather conditions. मौसम के हालात वहां से स्टडी कर रहे. स्टडी करना समझ लीजिए, हम लोग बचपन से स्टडी करना, किताब कॉपी लेके बैठ जाने करते स्टडी करना, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम, दैट्स करेक्ट. But study means to observe. To study means to observe. For example, psychologists observe or study human behavior. Psychologists study human behavior, right? Zoologists, they study animals. Botanists, they study plants. अब वो तो किताब तो है नहीं कि खोल के बैठ जाएंगे. They study plants, they observe, they learn about them, okay? And we read about a lady who studies snakes, right? She studies snakes In space. And we're doing experiments with plants. We are doing experiments with plants. We are doing experiments with plants. Japanese people speak with American. Japanese people speak with American pronunciation. Sachit is coming online. He's not here. Is Shlok here? Sachit, beta, how are you doing? Sachit. Good afternoon, sir. Hi, how are you doing? Nothing, sir. Where is Shlok? Why are you not in the physical class, sweetie? Please. My brother has some work, sir. All right. There are 2 special chairs for you today. Unfortunately, not the plastic chairs. Come. Yeah. Did you see that? Yes, this should be on her head, right? The right place is her head. Yeah. This is the cap for her. And look at Ayat. Ayat is playing it cool. I don't care. You are a child. You do these things. I'm mature. I don't react. That's her attitude. You are a kiddo. You are behaving like a kid. I'm a mature girl. I don't react. Another child would have tried to put it back on her head. But she's saying, no, I don't care. It's fine. I don't care. I'm cool. See, this is also a reaction. And now she will say, okay, let's push it a little more. Let's push it a little more. Let's see if we can get a reaction. Yeah. All right. She's not getting married. What are you doing? She's not getting married. Okay. We do this when she's getting married. We cover the face and we say, yeah, finally. I think, Ayat, it is time to react a little bit. What do you think? Maybe it should go back on her Inaya's face. What do you think? No, don't. Okay. No, don't. She's saying, no, don't remove it. It is best there, right? She looks more beautiful this way. What do you think, Inaya? Yeah, I think so. Yeah, she looks great this way. So
Ayat, do you want to remove it? No? This way she looks more beautiful, no? Yeah. So keep it covered. Don't uncover your face. You bad woman. Say this. You bad woman, you want to uncover your face? No, you can't do that. All right. Now I'm going to send this clip to your papa. Okay. So, no, let her, let her. Remove it. Yeah, good girl. Okay. So, where was my mouse? What happened to my mouse? Azan beta, check. Is it connected? My mouse? I can't see the mouse cursor. Connect it again. No, no. Yeah, it's working now. Fine. Thank you. Let's continue. To see how they grow in zero gravity. We are doing experiments with plants to see how they grow in zero gravity. What do you do when you aren't working? What do you do when you aren't working? What do you do when you aren't working? Well, I spend a lot of time just looking down at you. Well, I spend a lot of time just looking down at you on Earth. On Earth. And I think how lucky I am to. And I think how lucky I am. And I think how lucky I am. He feels thankful. Remember the word? He feels thankful. Because जब आपको एहसास हो, when you feel that somebody has helped you, then you are grateful to that person. But when you are overall happy and you consider yourself lucky for a certain thing, for a certain situation, overall, then you feel thankful. All right. For example, these girls can feel thankful that their parents are educated and give them the best education. And, because there are other girls your age, they are doing bartan in their house. They are doing the dishes in their house. Your age, trust me, it is true. Okay. There are 7-year-old girls, 8-year-old girls, 10-year-old girls doing the bartan in their houses. They are doing the dishes in their houses. But you guys are here getting quality education, right? Thanks to your parents and thanks to your situation. So you can say, we are thankful for what we have. We are thankful for what we have. So thankful means that feeling that I am lucky. I think it's a good feeling, when you feel thankful, then you do not become arrogant, right? And you don't complain when you feel thankful. So thankful and grateful are slightly related, but different. So he says, I feel how lucky I am. I think how lucky I am. It means he feels thankful. Be here. To be here. Yeah. It's not about parents or 2XYZ. Very bad question because you didn't listen to me. When we feel that somebody has helped us, then we feel grateful to that person. We feel grateful to that person. Did you hear me now? So papa, mummy are people. So when we feel somebody has helped us, we feel grateful to them. So we feel grateful to our parents, right? But when we feel overall lucky for our situation, then we feel thankful. You're walking down the road and you see a man without a leg or without his leg. Then in that moment, you feel thankful that you have 2 legs. Got it? So you feel thankful that you are lucky. You have that feeling that you are lucky. You are in a good situation. Other people are not in the same situation. You feel thankful. So he feels thankful that he is in a space. He can see the earth from there. And I wish that everyone could see the earth from space. And I wish that everybody could see the earth from space.
He wishes that everybody could see the earth from space. Complaint number one. Where are the sentences in the group? I asked you all to write sentences about this. What are your wishes? You guys said some sentences here in the class, but you didn't write them in the group. Why is that? Complaint number one. Ashfi, even you didn't write. Actually, you were not present on Saturday. You were not here. Where were you? Went to see a boy for Apia. Who will get married first? Ashfi or Apia? मुझे तो लगता है आफिया निकल जाएगी पहले कहेगी आप ही तो वेट कर रुक जा थोड़ा दिन ओके अश्वी why were you absent on Saturday? Engagement. Why did I feel it was about wedding somehow? This is called, you know, psychic powers. Psychic powers means you have some extraordinary abilities, things that people can't explain. I talked about marriage. It's another thing I didn't talk about her friend's marriage, but she was absent because of that. And in a way, they both were looking for boys for themselves. When you go to a wedding, when you go to an engagement, there are lots of boys there. Yeah, he looks good. They look at you. Yeah, she looks good. Yeah, your families also look at those boys. लड़कियां ठीक है मेरी बेटी के लिए. And then they talk about the family. Yeah, these things happen. शादी में लेके जाते हैं बेटियों को. Because the boy side, there will be lots of people who will be looking for brides. तो भाई हाँ हमारी बेटी भी है देख लीजिए. Okay. Na 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 na. Okay. Zara, can you exchange your seat with her, please? Go to sit there. I know you wanted to sit on the plastic chair. She's very clever. Come here. Yes, thank you. Okay. Yeah. Now, I wish everybody could see this, everybody could see the earth from there, from space. तो I wish मतलब काश मतलब आप अपनी ख्वाहिशें बता रहे हैं और ये ख्वाहिशें ज्यादा चांस है पूरी नहीं होंगी. Okay, chances है कि नहीं होंगी पूरी. Okay, I wish everybody could see the earth from space. Is it possible, everybody? So that kind of thing. काश मैं थोड़ा लंबा होता. तो अब लंबा हो नहीं सकते, ये नहीं बोलेगा ये बात. ही कैन बी टॉल. ओके, ये हो सकता है अभी हम ज्यादा लंबे होते जितने हैं उससे. तो दैट्स अनदर थिंग. अभी अचानक से कैसे हो जाओगे लंबे? आई विश. उसके बाद जो भी बोलना है आपको बोलना है. देखना, गौर करना. ही सेड आई विश एवरीबॉडी कुड सी. कैन सी नहीं बोला उसने. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैन एंड कुड? कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट एबिलिटी. तो उसने कैन नहीं बोला, प्रेजेंट फॉर्म नहीं बोला. कौन सा फॉर्म बोला? पास्ट फॉर्म. आई विश एवरीबॉडी कुड सी द अर्थ फ्रॉम स्पेस. तो आप बोले काश हम सब लोग उड़ पाते. आई विश वी कुड फ्लाई. तो फिर कई टैक्सी ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स बेरोजगार हो जाते ना. truck manufacturing companies, bus manufacturing companies, all those companies will go bankrupt. If something happens overnight and tomorrow all humans could fly, just imagine this, okay? Then what kind of changes would you see in the world? Use your imagination, everybody, and talk to each other, okay? Imagine that tomorrow we wake up in the morning, all of us, and all of us, all over the world, okay? All of us have a special ability. We could fly, okay? What would happen? Talk to each other. Have a little chit chat. What would happen if tomorrow? अब इसका जवाब इंग्लिश में बात करते समय ऐसे बोल सकते हैं कि पहले तो हम उड़ करके जाते हैं XYZ के घर पे, ठीक है? तो आप कैसे बोलेंगे? The first thing I would do, I would fly. I would to XYZ's house. Okay, yeah, and go and meet that person secretly. Isn't it? Yeah. But unfortunately, everybody would be flying, so it is not going to happen. Okay, everybody would see. The sky would be crowded. Okay, 8 billion people would be in the sky tomorrow morning. Trust me. Everybody would like to experience it. Yeah. Huh?
Yeah, we would have to use traffic lights in the sky. देखिए एक जवाब आया कि हम लोग को ट्रैफिक लाइट्स लगाना होगा. We would have to. कि हाँ, would खाली किस लिए लगा रहे हैं? बताने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा करते. तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या करते, रिजल्ट क्या होता, ये बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? वुड खाली एक. बाकी कैसे बोलेंगे? द स्काई वुड बी क्राउडेड. द स्काई वुड बी क्राउडेड. अच्छा चलो छोड़ो, अभी उसको दूर तक चला जाएगा वो. अभी तुम तैयार नहीं हो उसके लिए. इट्स ओके. लेट्स जस्ट शेयर आवर विशेस. अपनी विशेस शेयर करो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता. You wish you were an Indian cricketer. Then you would not get a chance to play because they already have 11 good players. So if I wish I was a good Pakistani player, you would straight away get a chance in the team. Look at them, they're losing very badly. There was no fight yesterday. They played like Bangladesh. Then one of my students, Kashif Iqbal, he said he lives in Dubai, but he's in Indian. So he says, no, sir, they're not like Bangladesh. They're like Zimbabwe now. Zimbabwe. I mean, did it feel like India-Pakistan match? First 25 overs, they batted okay. And then suddenly they started losing wickets and they were bowled out. They could not even bat all the overs. How many runs did they score? 240 odd runs. अच्छा, वहां पर ऑड वर्ड बोला, इसका अंदाजा लगाना. 240 ऑड रन्स. तो 40 ऑड बोलने का मतलब है 40, 42, 44. तो उसमें मैं उसको प्रिसाइज नहीं होना चाहता. यही सब चीजें आप सीख सकते हैं सुन करके आसानी से. So they scored 240 odd runs only. Okay. And they thought they would stop India. We chased down 350, we chased down 330, and they thought they would stop us with the 240 run score. It was not to happen, and it didn't happen. So the match was very boring, to be honest. The only fun thing was Shreyas Iyer's hitting. Shreyas Iyer hit some good sixes. And, Prince's batting as well. What is his name? Gill. Yeah, he's the prince. Kohli is the king and he is the prince. And some of his shots were amazing, really good. And the ball that got him out, that ball was wonderful too. Yeah. But, I really wanted to see Shreyas Iyer hitting some sixes against that. Yeah. Arrogance against India. Australians don't show arrogance now. English team got beaten so badly here in India, and then you are showing arrogance to India. I think you are not Wasim Akram. Relax, right? There was a time when they had players like Wasim Akram and Bakar Yunus, Javed Miadad, Inzamamul Haq. They were a good team. They could show that arrogance. But now you're a bacha team. If you play against India 10 matches, you will lose 8 or maybe 9. Yeah. It was so boring, actually, I wish they had allowed India to bat first. We would have scored 350 odd runs. Okay. Coming back to the topic. I wish. What did you hear? Naam lijiye. Asim wished that he could be or he were an Indian cricket player. आप इसी बात को दोहरा दीजिए, अपना सेंटेंस मत सोचिए. आप हिंदी में समझ जाएंगे क्या. आसिम की ख्वाहिश ये है कि काश वो क्या हो पाते, इंडियन क्रिकेटर हो पाते. आसिम wished that he could be an Indian or he were an Indian cricket player. Very good. और बताइए भाई, और किसी की ख्वाहिश बताओ. जल्दी जल्दी बताओगे. तुम लोग के पास 48 घंटे थे. डोंट फॉरगेट दैट. तुम हिंदी में बता सकते हो. यू कैन टेल मी इन हिंदी. आई वुड टेल यू इन इंग्लिश. काश मैं आज से बड़ी होती. देन काश मैं अकेली होती. ये भी नहीं. Now you understand. I was always right. You girls love each other a lot. You only show here that he did. कौन आयत adopted होती.
ओके, काश आयत अडॉप्टेड होती। लेट्स से इट इन इंग्लिश। बोलो, आई विश आयत वर अडॉप्टेड। से इट अगेन, आई विश आयत वर अडॉप्टेड। रियली? ये बच्चे किधर से बच्चे हैं? सुनो, काश वो अडॉप्टेड होती तो तुम उसको ज्यादा चिढ़ाती। ओ माय गॉड, क्या बोल के कि तुम अडॉप्टेड हो। डू यू स्टिल डू दैट? डू यू स्टिल कॉल हर अडॉप्टेड? शी कॉल्स यू अडॉप्टेड। ओके, शी वुड टेक रिवेंज। ऑलराइट, टेल मी मोर। हाँ, तो आइडिया तो आ नहीं रहा। देखो बेटा, क्या हो रहा है, ये छोटी बच्ची है ना, तुरंत आइडिया है ना। और ये बड़े लोग क्या हो रहे हैं, सन्नाटा, स्कूल की वजह से आदत नहीं होती अपने आप को तुरंत बताने की। बहुत सारे आइडियाज है, चलो मैं दे देता हूँ एक ख्याल। बुर्ज खलीफा, बोलो। आ गया आइडिया ना। हाँ, क्या वो आइडिया है, बताओ। आई विश आई हैड अ फ्लैट इन। अच्छा, वो उसका नहीं है, तुम्हारा क्या है, सैली, सली, सैम। हाँ, यू विश दैट यू वर द ओनर ऑफ बुर्ज खलीफा। भाई ऐसे सपने भी देखो तो यार, ऐसे देखोगे। सही है। Yeah, of course. I said I wish I had a flat in Burj Khalifa. Now, she is not happy with that. I wish I were the owner of Burj Khalifa. Okay? चलो सब लोग उसके नाम से बोलो। Sam wished that she were the owner of, right. Okay. हाँ जी। और विशेस भी बोल सकते हैं। सैम सैम विशेस, राइट। सैम विशेस दैट शी वर द ओनर ऑफ बुर्ज खलीफा। गुड, कैरी ऑन। आइडिया दो, आइडिया दो। ओके। व्हाई जुपिटर? ओके, थ्री गर्लफ्रेंड्स। कम ऑन गाइस, मेक अ सेंटेंस। हाँ, उमर। हाँ, कैसे बोलेंगे? हाँ, कैसे बोलेंगे? काश मेरी तीन गर्लफ्रेंड्स होती, एक सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए, एक शाम के लिए। और आई मीन ना, हाँ, कैसे बोलेंगे? आई विश आई हैव हैड, क्योंकि हैव तो है प्रेजेंट, और हमें वही आइडिया पास्ट में एक्सप्रेस करना पड़ता है बताने के लिए कि सच तो ये चांसेस भी नहीं है। आई विश आई हैड। ओके, काश मैं मिलियनेयर होता। काश हम उड़ पाते हैं। आई विश आई कुड फ्लाई। ओके, श्रेया, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। काश में इंग्लिश फ्लुएंटली, बोलो बोलो बोलो, हिंदी में पूरा कर दो। काश में इंग्लिश फ्लुएंटली। यस यस, गो ऑन गो ऑन। मुझे पता है तुम्हें क्या पता है बोलना है, और तुम्हें पता है क्या बोलना है, बोल दो बस। हाँ, बोलो। इज वेरी शार्प। कमान कमान, बोल दो ऐसे ही, कोई टेंशन। हिंदी 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 हिंदी। हाँ, करना तो है, वो तो करोगी। लेकिन जो विश करने वाली बातें होती है उसमें वो चीजें बोलते हैं हम लोग, जो जिसके चांसेस अभी फिलहाल नहीं है, अभी कम चांसेस। कि जैसे काश मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही होती अभी। अच्छा देखो, मैंने कहा बोल रही
जो बोल रही होती में कंटिन्यूटी की फीलिंग आ रही है ना। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? आई विश आई वर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। ओके। और कैसे बोलेंगे काश मेरी मम्मी टीचर नहीं होती? तब कैसे बोलेंगे बेटा? आई विश माई मदर वर नॉट अ टीचर, राइट? अब मम्मी के लिए कुछ विश करो कि काश मेरी मम्मी ये होती वो होती ऐसे। चलो इनाया, मम्मी के लिए काश मेरी मम्मी एक टीचर होती, या मेरी टीचर होती, मेरे स्कूल में टीचर होती, राइट? Oh, lovely. The principal of my school. Okay, that's a beautiful sentence. देखा, मैंने हल्का सा एनकरेज किया, खाली थॉट डाला बस, लेकिन वर्ड्स अरेंज कर लिया ना इसने। आई विश माई मदर वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। वेल डन। आई आपकी क्या ख्वाहिश है ऐसी? Oh my goodness. If you wish that you had a chocolate factory of Mr. Beast. So, Mr. Bean or Beast? Beast. I know Mr. Beast. He is a YouTuber, right? He has a chocolate factory, and you wanted to be the owner of that chocolate factory so that you could just eat all the chocolate just yourself. Would you sell any of the chocolate, or you would just eat? Produce the chocolate in the factory and eat. Amazing idea. Share with her. Would you share? उससे शेयर करती हिंदी में क्या बोलेंगे? उससे शेयर करती, तुम करती है था कुछ नहीं बोल पाएंगे, पता है ना? क्योंकि क्या कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल है, इमेजिन कर रहे हैं, तो है था कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उससे करती तुम शेयर, उससे करती। अब देखो इंग्लिश में कैसे बोल रहा हूं, गौर करना। डू यू शेयर, डिड यू शेयर, कुछ नहीं। वुड यू शेयर विद योर सिस्टर इनाया द चॉकलेट? No, Inaya, you would have to get another factory. The keys of the factory, right? In the night when she was sleeping. Take only the chocolate. But the best thing would be to take the keys so that you could go and lock it from inside. Now Ayat is outside and you are in the factory. You don't want the factory, you want the chocolate only. Okay, so you would just steal some chocolate, as much as you wanted to eat. That's it. All the chocolate. Okay. But you can't eat all, you couldn't. देखो, couldn't, मैं गलत बोल गया, can't नहीं बोलना था मुझे। क्या? You couldn't eat all the chocolate. क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, तुम तो खा नहीं पाती, खा नहीं पाती, तुम तो खा नहीं पाती ना सारा चॉकलेट। You couldn't eat all the chocolate. ये couldn't again past tense है कैन का, लेकिन हमें यही चाहिए क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल, इसलिए you couldn't eat all the chocolate. You wouldn't be able to eat all the chocolate. Really? I would eat. खा लेती। तो गौर करो ना, है ना, था है, क्योंकि है से वो प्रेजेंट हो जाएगा, था से पास्ट हो जाएगा। लेकिन खाली ऐसे बोलने से ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता, ऐसा करते। हिंदी में ऐसा है ना, और इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस में आई विश वाले पार्ट में आप पास्ट ले जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट बोलना है उसमें वुड बताते चलते हैं। जैसे मैंने पूछा था, वुड यू शेयर इट विद इनाया? वुड यू शेयर इट विद इनाया? नो, आई वुडंट। ना, हम नहीं करते। आई वुड ईट अलोन। ये क्या है? रिजल्ट है, हम अकेले खाते। अगर मेरी खुद की फैक्ट्री होती है ना, तो वो रिजल्ट है। धीरे धीरे आ जाएंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। और कपड़े पेड़ पे उगते, काश, है ना, क्या मजा आता। मतलब कैसे बोलेंगे? आई विश क्लोथ्स, वर्क बोलने की ग्रू, पास्ट टेंस। आई विश क्लोथ्स ग्रू ऑन, या ऑल राइट। Maybe people would stop fighting. Maybe people would stop fighting. Maybe people would stop. उसने कहा, पहले उसने कहा, I wish everybody could see
the earth from here, maybe people would stop, maybe people would stop fighting. हो सकता है लोग लड़ना बंद कर देते, न है न थे। मे बी हो सकता है कि लोग लड़ना बंद कर देते। आई विश एवरीबॉडी कुड सी द अर्थ फ्रॉम हियर, मे बी पीपल वुड स्टॉप फाइटिंग। चलो बोलो, मे बी पीपल वुड स्टॉप, पीपल वुड स्टॉप फाइटिंग। यहां वुड पे सबसे ज्यादा फोकस, मे बी पीपल वुड स्टॉप फाइटिंग। If they could see how beautiful our planet is. If they could see, if they could see how beautiful our planet is, if they could see how beautiful our planet is। बेवकूफ है क्या रे तू? एक लड़की सुंदर रहती है उसके लिए ज्यादा लड़ाई होता है ना, होता है ना, चार मोहल्ले में लड़ाई होती है। और ये कह रहा है अगर धरती देख ले सब कितनी सुंदर है तो कम लड़ाई होगी। पागल हो गया, और ज्यादा होगी लड़ाई। सुंदर धरती के लिए सब कहेंगे मेरा है मेरा है, राइट। अच्छा तुम्हारे कोई बात नहीं, जो बोरिंग जोक लगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं ठीक है, इट्स ओके। सब एवरीबॉडी बस हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, नहीं मजा आ रहा है, ओके फाइन इट्स ओके। हाँ पता नहीं, मेरे को लगता है मेरे तो जोक्स फनी है, हर एक किसी को लगता है अपन उसका जोक फनी है, बट द ऑडियंस डिसाइड्स, राइट। तो मैं कंप्लेन तो नहीं कर सकता। अगर मैं कॉमेडियन होता तो मैं जूते चप्पल बरसाने लगता किस पे, ऑडियंस पे। वो मुझ पे क्या बरसाते, नहीं हंसेगा बे। ओके गो हेड, रिपीट द लाइन। पीपल, हो सकता है लोग लड़ना बंद कर देते हैं अगर वो देखते कि धरती कितनी खूबसूरत है। मे बी, मे बी एक वर्ड के तौर पे, ओके, मे बी पीपल वुड स्टॉप फाइटिंग, मे बी पीपल वुड स्टॉप फाइटिंग इफ दे could see how beautiful our planet is, if they could see how beautiful our planet is, maybe people would stop fighting, maybe people would stop fighting if they could see how beautiful our planet is। अगर लड़कियों को पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं तो हजारों लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए लाइन लगा देंगी, है ना। thousands of girls would choose to marry me, thousands of girls would choose to, if they के बाद बोलो, दे के बाद बोलो, नो बोल सकते हैं, नो, knew, if they knew, past tense, if they knew how much money I have in my bank account, okay, है ना। उल्टा बोलो कि एक लड़की मुझसे शादी करने के से हटना होगी अगर उसको पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। नॉट अ सिंगल गर्ल, नॉट अ सिंगल गर्ल, डायरेक्ट मैरी बोल सकते हैं, करती, रिजल्ट है ना। रिजल्ट में कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुड। नॉट अ सिंगल गर्ल would marry me if she found out my bank account details, right? Or the balance in my bank account. If she found out my balance, if she found out the balance in my bank account balance, yeah. और क्या, तुम्हारा नेचर अगर किसी को पता चल जाएगा ना तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा लगेगा। Nobody would marry you if they got to know, पता चल जाए, got to know your true nature। किसके लिए है ये, मेरे लिए मत बोल देना सर, आपके लिए। आई एम ऑलरेडी मैरिड, कोई फर्क नहीं पड़ता। वट एवर दे नो अबाउट यू डजंट मैटर। ओके
और राइट, तेरे पास 10,000 रुपया होता ना, तो अभी हम सबसे पहले एक बढ़िया सा एडिडास का जूता खरीद। if I if I if I had 10,000 rupees in my pocket, ना बुआ, खरीदते रिजल्ट हवा, रिजल्ट है ना, खरीदते ही तो रिजल्ट है ना। आई वुड बाय आई वुड बाय a pair of Adidas shoes. अगर यहाँ सिर्फ हम दोनों होते तो हम तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर देते, लेकिन यहाँ मेरे मम्मी पापा भी बैठे। चलो बोलो। आई आई वुड प्रपोज टू यू, प्रपोज टू यू, ये बिहार में लोग नहीं समझते। शादी के लिए प्रपोज करना, प्रपोज टू संभालना, ओके। उसमें डायरेक्ट प्रपोज यू नहीं बोलना है। आई वुड प्रपोज टू यू, बाकी हो गया अपने आप, हो गया। आई वुड प्रपोज टू यू, चाहे तो बोल सकते फॉर मैरिज, बट अदरवाइज आई वुड प्रपोज टू यू, अगर हम दोनों अकेले हो। इफ इफ वी वर alone here, but the problem is my parents are also here. Got it? ऐसे बहुत यूजफुल सेंटेंस है ये, रोजमर्रा की बातचीत में बहुत यूजफुल सेंटेंस है। बहुत बहुत चीज ऐसे बोलते हो आप। थोड़ा सा ये शर्ट बड़ा होता ना तो तुमको पक्का फिट आ, हो गया ना। अब वो शर्ट बड़ा हो जाएगा। बोलो। इफ द शर्ट इज, तो बोल नहीं सकते। एक सेकंड, ये रिजल्ट है क्या? तो फिर रिजल्ट क्यों बोला, क्यों बोला रिजल्ट? ये तो इफ बोल रहे, इफ, अगर, ये रिजल्ट थोड़ी है। फिट आ जाता ये रिजल्ट, ठीक है। अगर ये शर्ट थोड़ा बड़ा होता, शर्ट बड़ा है कौन से वर्ब से बोलते हैं? बी वर्ब से बोलते हैं। द शर्ट इज बिगर, पास्ट टेंस करना है। बोलो। इफ दिस शर्ट वर a bit bigger, it would fit you perfectly. It would fit you. Sounds good? Okay. तो अभी फिलहाल तो हमको दे दे पहले, क्योंकि तेरे को फिट हो नहीं रहा। ओके। आगे जोड़ चाहे जोड़ते रहे, ठीक है। ये बीच बीच में ऐसी लाइंस पढ़ते हैं। तो आई गेस यू गाइस विल प्रैक्टिस दिस। आज तो करेंगे ना? अगर कल नहीं करके आए तो प्रैक्टिस तो 50 रुपीज। व्हाट इज दीपक एडवाइस, दीपक आइडिया? बिरयानी पार्टी, बिरयानी पार्टी वी विल हैव, वी विल हैव। आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल, ऑल द पीपल हु आर नॉट हियर। भाई सब लोग से बातें करो, पता करो कौन कहाँ है, कहाँ छूटा हुआ है सारा, ठीक है। कॉल देम ऑल। हु? ये a lot of people are absent. Done. Take It's over. So, guys, that was the conversation. You want to practice the conversation with each other? Of course, you want to practice, right? No, you don't want to practice. Why not? Why don't you want to practice? I guess you do. People want to practice. So, have you written the audio script, anybody? No? Anybody has written the audio script? Nobody. Nobody has written the audio script. पता है श्रेया, ये काम मैं कई साल से कर रहा हूँ, ठीक है।
जैसे तुम आई, तुम 10th कर चुकी हो एक बहुत अच्छे स्कूल से, इंग्लिश मीडियम। कोई कितना भी मुझे समझाने की कोशिश कर ले कि तुम्हारी गलती है, मैं नहीं मान पाऊंगा, मैं नहीं मान पाऊंगा। और मेरी बात समझने की क्षमता बिहार से में किसी के पास नहीं है। इंग्लिश के मामले में समझने की क्षमता मतलब कि मैं क्या सोचता हूं और क्या सही है और लोग क्या सोचते हैं, इंग्लिश के मामले में ये मैं नहीं समझा सकता। उसकी वजह बताता हूँ बेटा। बिहार से में कितने इंग्लिश टीचर होंगे? हजारों। मेरे से पहले भी, मेरे बाद भी, मेरे साथ भी। मैंने अकेले कहा था कि मेरी बच्ची जो होगी या मेरा बच्चा जो होगा, जो भी होगा मेरी शादी के बाद बच्चा, ऐसा मत बोलना कि शादी के पहले वाले के बारे में क्या प्लान है, ऐसा मत पूछना। मेरी शादी के बाद जो बच्चा होगा, क्योंकि शादी के बाद ही बच्चे होते हैं, हाँ, तो वो स्कूल जाने से पहले इंग्लिश बोलेंगे, स्कूल जाने से पहले। स्कूल जाने के बाद छोड़ दिए, स्कूल पे छोड़ दिए। क्यों मैं ये बात ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं टीचर हूँ इंग्लिश का ना, तो मैं सबसे पहले किससे सिखाऊंगा? आपकी मम्मी ने कोशिश आपको की होगी सिखाने की, पक्का की होगी। लेकिन किसी तरह से वो काम नहीं किया। अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, बस एक बात छोड़ के, कि मैं जैसे इन चीजों को देखता हूँ वैसे लोग नहीं देख, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं किया। जैसे मैंने वो बात कही थी, किसी को यकीन नहीं था कि क्या बकवास करते हैं आप, स्कूल जाने से पहले कैसे सिखाइएगा, तो हो जाएगा। और जब वो 3-4 साल की थी, पार्टीज में जाती थी, मेरे साथ इंग्लिश बात करती थी, तो लोग उसके सामने बुक रखते थे, कहता पढ़ना नहीं आता उसको, तो पढ़ता नहीं आता तो बोलती कहता, पहला आदमी बोलना सीखता कि पढ़ना। तो ये कौन सी बात थी? सोचिए कि लोग ऐसे कैसे सोचते थे कि उसको पढ़ना नहीं आ रहा तो बोल कैसे रही। ये कोई सोच है, ये कोई पॉइंट है? आप हिंदी पहले बोलना सीखे थे कि पढ़ना? आप प्री स्कूल में भेजते हैं, प्री स्कूल समझते हैं, प्ले स्कूल। प्ले स्कूल में आपको किताब नहीं पढ़ाया जाता ना? 2.5 साल आप रहते हैं, 3 साल, 2.5 साल की उम्र से आते हैं, 2.5-3 साल, 5, 5.5 तक रहते हैं वहाँ। क्या आपके अंदर कुछ क्षमता डेवलप होनी चाहिए, लैंग्वेज कम्युनिकेशन की होनी चाहिए? खास करके वो बोल के भेज रहे हैं कि यहाँ इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल है, यहाँ चीजों में इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देगा। उन बच्चों को कहाँ जाना है? इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना है। हुआ कुछ नहीं। 2.5 साल में क्या सीखा? ए फॉर एप्पल, दो फॉर दुपल, तीन फॉर तीन पल। ओके, तो एप्पल दुपल ऐसे ही है ना? तो बस यही समझ की बात है, मेरा अप्रोच समझ नहीं आएगा तो अब आपकी कहानी मेरे लिए बहुत, कहते हैं ना कि जो चोट इतनी छोटी थी उसको इतना बड़ा बनने के बाद उसको सही करना, और इतनी छोटी में, इसलिए मैं छोटे बच्चों के साथ काम करना चाह रहा हूँ। आपके जैसे कितनी श्रेयाएं होंगी अभी बिहार में, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ, हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि लोगों को एजुकेट करूँ, स्टूडेंट को नहीं। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, और ये मेरे लिए बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि कई लोग आपको सिर्फ जज करते हैं किस चीज से? पैसे से। पैसा कमाना मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। मैं हमेशा चाहता हूँ लोग समझे कि करना क्या है, ताकि लोगों में बदलाव। ठीक है? और इंग्लिश सीखने सिखाने का वो जो तजुर्बा है मेरा, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि आई एम द ओनली टीचर हु कैन बोस्ट दैट माय चाइल्ड कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर शी स्टार्ट। ठीक है? 5वीं 6वीं तक जाते जाते, मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया कि आपके स्कूल की एक कहानी है। मेरी बेटी आपसे थोड़ी छोटी थी जब ऐसा हुआ था, वहाँ टीचर के साथ थोड़ी सी बात हो गई, क्योंकि वो टीचर की हेल्प करी, छोटी बच्ची मेरी, उसको समझ में आ जाता था इंग्लिश, कुछ भी बोलोगे ना, 5 साल में भी उसको कुछ भी इंग्लिश में बोलते तो उसको पलट करके वो हिंदी में दूसरे को बता देती कि क्या बोला गया। उसमें 1-2 वर्ड छोड़ती, 3 वर्ड छोड़ती, मैसेज वही रखती, टोटल मैसेज वही रहता। मैसेज में रखना मायने रखता है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, इंग्लिश। मैं भारत का रहने वाला हूँ। देखो आप लोग, पता है क्यों अटक गए? क्योंकि अभी आपके जहन पे रहने वाला वर्ड का असर हो रहा है। अगर मैं कहूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, तो या आई अंडरस्टैंड। तो क्या फर्क है दोनों में? है कोई फर्क? मैसेज में कोई फर्क है? आई एम फ्रॉम इंडिया मतलब क्या हुआ? जरूरी कि मैं भारत में रहता हूँ? नहीं। बहुत लोग हैं भारत के रहने वाले हैं, रहते कहीं और है, वो कहीं भी मिलेंगे किसी बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया।
जैसे कुछ एक्टर्स हैं इंडिया के, चले गए हैं बाहर रह रहे हैं, माधुरी दीक्षित कहीं भी होंगी, क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम, भाई भारत में रहती है ना, शी लिव्स इन अमेरिका, राइट? तो वो क्या बोलेंगे हिंदी में किसी को? मैं भारत की रहने वाली हूँ। तो मैंने ये सेंटेंस बोला, आप अचानक स्किप हो गए ना, पता चला बचपन क्या असर करता है, उसके साथ वैसा नहीं। अगर मैं उसको ये हिंदी बोलता तो वो इंग्लिश बताती, इंग्लिश बोलता तो ये हिंदी बताती, 5 साल में भी, 4 साल में भी। तो ये जो अप्रोच है मेरे दिमाग का, मैं आप लोग को इसलिए नहीं बता सकता कि आप मेरे में कल करके दिखाओ, इट्स लिटिल टू लेट। अभी आप सबके सामने सबसे छोटी स्टूडेंट एक लाइन अपने मन का बोली थी कि नहीं बोली थी? क्या, कौन सा लाइन याद करो? आई विश माई मदर वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्या कहते हैं इसको? अगर इफ लगा दो उसको आई विश की जगह तो ठीक है। नानी मरती है कई लोगों की, एसएससी की तैयारी करने वालों की, कंडीशनल नहीं समझ में आता है। और ये कितने साल की है? 7 और 8। हाँ ठीक बोला बेटा, नहीं तो वो फिर बोलती 7 बोलते तो फिर बोलती है। थैंक यू अजान। 8, 8, 8। Remembered, she corrected us when I said 7 last time. Okay, she has become 8. Some days ago you had your birthday. Right. Okay. So the point is, मुझे कितनी मेहनत लग रही है इसको पढ़ाने में? आपको लग रहा है मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ इस पे? और अगर ये यहाँ नहीं होती तो ये सेंटेंस बोल रही होती, इनके जहन में मुंह से आवाज तो निकल जाती, ये आवाज, आई विश माई मदर वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, यही बात। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू हैव अ स्कूल। ऐसे बच्चों के साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। जितने भी छोटे बच्चे आते हैं ना, 90% ऐसे ही होते हैं। अभी हमारे पास थोड़ी वहाँ टीचर्स की कमी है स्कूल में, क्योंकि हम कोई भी टीचर्स नहीं हायर कर सकते ना। जैसे बाकी स्कूल में क्या है, आप सुंदर लग रही हैं, आपको तुरंत हायर कर लिया जाएगा। आपके बात करने का अंदाज सही है, आपको तुरंत हायर कर लिया जाएगा छोटे बच्चों के लिए। पता है, मैं आपको बताऊं, मैंने अपना क्लास 10th का क्लास छोड़ के क्लास 1 में टाइम डाला है अपने लिए, क्योंकि मुश्किल हो रही है। आप कितने घंटे वहां कर सकते हैं? तो क्लास 1 to 10th है, तो अभी मेरे पास 8 पीरियड हैं, ठीक है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? तो मैंने क्लास 10th की एक क्लास में ये छोड़ दी कि उनमें जो चेंजेस आने हैं बाकी लोग कर ही रहे हैं, दूसरे लोग कर लेंगे। मुझे कहाँ जाना है? 1 में, ऊपर से छोड़ के नीचे, क्योंकि वहां नहीं आ पा रहा था मेरा क्लास, हम टाइम नहीं बिता पा रहे थे बच्चों के साथ। 1 में भी मैं समय बिताऊंगा। आपको लगता है सारे सीनियर टीचर्स ऊपर क्लास के लिए? सारे स्कूल का फिलॉसफी क्या है? सीनियर टीचर्स ऊपर क्लास के लिए और जूनियर टीचर्स नीचे क्लास के लिए। और जूनियर टीचर्स की सैलरी भी कम होती है, राइट? सैलरी की बात तो क्या करूं, मेरे सारे टीचर्स मेरे लिए हेल्प ही कर रहे हैं अभी फिलहाल, यही बोल सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज वी हैव द सेम विजन। ठीक। लेकिन ये तो मजा तब आएगा जब, अभी कितना समय बीता हुआ इन लोग के यहाँ पर, खाली इमेजिन करो, ठीक है। और जब ऐसे बहुत समय बीतेगा, 2 साल 2.5 साल बीत जाएगा, देन इमेजिन वेयर दीज पीपल विल। माई कंपनी मैटर्स। मेरे साथ समय बिताना मायने रखता है। It will make a big difference to you. Something that you have always wanted to have, but you couldn't have. What did I do? What do I do? I just thought all the time. श्रेया को भी कल बताया था, कल इनकी मम्मी आई हुई थी यहाँ पे क्लास में, पूछने के लिए, मिलने के लिए, सब चीज के साथ। बोर्ड नहीं है, मैंने कहा कि नहीं है। तो जो भी मुझे समझाना है बोल के समझाना है, और जो भी आपको समझना है सुन के समझना है, ताकि आप भाषा को भाषा समझ सके, आवाज समझ सके। जैसे वो शब्द बन जाते हैं ना, तो कई बचपन में ही कई बार दिमाग में बैठ जाते हैं कि तो यहाँ के लिए। और सच बताओ, जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो इंग्लिश किताब में ज्यादा देखते हैं या कान पे ज्यादा देखते हैं? आंख में ज्यादा देखते हैं, कान में ज्यादा देखते हैं? आंख में। वो आवाज बन ही नहीं पाती, इसीलिए पैरोट रह जाता है। एग्जाम्पल पहले बताया था परसों, और वो एक एग्जाम्पल है कि खाली पैरोट बोला सब जगह सही बोलेंगे, आपको ही पता है। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? I am doing it a little late, but I hope it is not too late, because energy, and I'm in my 40s. तो मुझे अपने आप लोगों से उम्मीद है कि आप में से कुछ उस तरह के बनेंगे आगे, जो इस स्कूल का जो विजन है उसमें कंट्रीब्यूट कर।
बिकॉज आउटसाइडर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं। सीनियर क्लासेस में मैनेज कर लेंगे, बिकॉज आई विल बी देयर इन एवरी क्लास, आई विल बी टीच, because I want to give them a chance to have my company in every class. Maybe 3 days a week, maybe 4 days a week, but I will spend time with them, all of them. And the best thing is the environment there we are trying to create English communication among the teachers first. That sound will fall on the ears of the students as well when the teachers are talking. Young kids, and that is how they learn. We have a hostel too, by the way. So if anybody who's living outside Bihar and they're thinking of a good school at a very, very affordable fee, then tell them that it is residential as well. We have this facility. I'm sharing with you guys the conversation in the group. So people just start your practice with each other. And do let me know if you don't understand what you're reading, if you don't understand the message. Mobile phones. You have your phone? You don't put together. You have a phone? Okay. You have a phone too? So maybe you could share yours with them, okay? So that you guys could practice together. All right. Ashfi, you have a phone, right? So practice together with her. Yeah. Okay. Yeah, fine. You guys have a phone there? Yeah. Okay, good. Yeah, you too. You too. Um, all right. So somebody doesn't have a partner. You, the brave. All right. So together, three of you together. Okay? Yes. Asif. Asif, no. Safi. No, not Safi. I keep forgetting his name. Danish. Start your practice, everybody. You two can practice together? Huh? Come again. You want to go to the bathroom? Please. Take it either this way or that way, wherever. No issue. So why don't you come here and start to practice with them? Mhm. Yes, you don't have a mobile phone. Yes.
Are we ready to move on? Okay, do practice the structure. What was the sentence that we practiced? Yeah. अगर लड़के कमेंट पास करना बंद कर दे रोड पे तो लड़कियों के माता पिता थोड़े ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे नहीं? How do we say this in English? If boys stopped or stopped passing comment. Stopped. Past tense मैंने यूज किया. हो तो नहीं रहा बेटा ये. होने वाला भी. ये बस आपकी ख्वाहिश है. तो हो रहा है. नहीं हो रहा है. चांसेस क्या है? फिल्म चांसेस है कैसा होगा? कमेंट्स पास कर रहे हैं और करते रहेंगे. बट हमने कहा अगर लड़के पास करना बंद कर दे कमेंट तो लड़कियों के माता पिता थोड़े ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे. If boys stopped what? Passing comments, right? Maybe the girls' parents in general, girls' parents would be less stressed out, less worried about the safety of their daughters or about their daughters. तो ऐसी बहुत सारी बातें बोलने के लिए स्ट्रक्चर यूज करते रहिए. अगर लड़के ध्यान से क्लास में बात सुने टीचर्स की तो सीखना आसान हो जाता है. ठीक है. अब ये बात जो है, अच्छा चलिए मैं उस पर लेके नहीं जाऊंगा. चलिए बोल दीजिए, वैसे ही बोल दीजिए. इफ स्टूडेंट्स पेड मोर अटेंशन, पेड gave past tense more attention to their teachers in the class, learning would become easier, right? Moving on. Vocabulary and listening, describing people. Everybody, look at this next page. Do you see a lot of people there? I'm sharing this page in the group, colorful pictures, a color picture. Okay. There is a girl, Ruby, more like Inaya. Yeah. Do you see? Next page, yeah. Do you see Ruby there? Yeah. She looks more like you. Giles looks more like me. His hair is black, mine is white. Mark looks more like who? Mark. Okay. Mark looks more like, the guy we don't have in the class right now, Rudra. No. Cheryl. Cheryl looks like Cheryl. Tanya. Ayat looks like Tanya. I think Stephanie looks like Tanya.
Stephanie looks more like Tanya. Maybe the color of the eyes and the hair is different, but still I will say they look very similar. Simon and Matt. And then we have Amy. Who is the most beautiful? Who is the most beautiful in your opinion? Stephanie. Stephanie, because she looks like you. Great. Yeah. Who do you think is the most beautiful, Inaya? Ruby, because she looks like you. Yes. Okay, boys, what's your opinion? Who looks most beautiful? Tanya. Tanya looks most beautiful. What about Cheryl? What about Amy? Okay, who doesn't look very friendly? Who doesn't look very friendly? Giles. Look at Giles. He doesn't look very friendly. He has no smile on his face. Everybody else has this little smile. Stephanie is not smiling. Yeah, she doesn't look very friendly either. But Giles definitely looks very serious. Formal for maybe a business meeting or something. Look at his clothes. Formal clothes. He is wearing. Giles is wearing formal clothes. Amy is wearing smart clothes. Right. Amy, and we can't see Stephanie's clothes. We can only see her scarf, colorful scarf. Mark is wearing casual clothes, jeans and t-shirt, jeans and a t-shirt. Yeah. Okay. Let's listen to an audio file. I'm playing carefully. Listen carefully, everybody. Tape script 10.9. Listen carefully. Who is it? 1. Who is it? Listen to the description and tell me which person is being described. She's got dark brown hair and she's quite pretty. She's wearing boots and a hat and a red scarf and she's jumping in the air. Who is he describing? He is describing Tanya. He is describing. मैंने पूछा, who is he describing? Is he describing? Who is he describing? कैसे पूछा मैंने? Who is he describing? मतलब किसको describe कर रहा है? Who is he describing? Answer. He is describing. Yeah. Right. Okay. Next. She looks really happy. Yeah, she looks happy. Really happy. Yeah. 2. He's got short dark hair. He's got short dark hair. He's wearing trainers He's wearing trainers and and a purple t-shirt and he's carrying a ball. He isn't very tall. who is she describing? Okay. 3. She's wearing a scarf, she's pretty, and she's got long blonde hair and Long blonde hair blue eyes. and blue eyes. She isn't smiling. She isn't smiling. Who is he describing? He is describing Stephanie. He is describing Stephanie. She doesn't look very friendly. 4. He doesn't look very happy. He doesn't look very. Perhaps he's a businessman. Perhaps he's a businessman. He's wearing a white shirt and a striped tie. He's wearing a white shirt and a striped tie. He's also wearing black glasses. He's also wearing black glasses. He's also wearing. Who is he? Yeah. Giles.
Tape script 10.9. Who is it? 1. She's got dark brown hair. Repeat. She has got dark brown hair. She's got. Repeat. In Hindi, again, words will not match. हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे बोली she's got dark brown hair. यही सुना था ना? Repeat. She's got dark brown hair. हिंदी में बोली. अरे 5 बजने वाले हैं. Wow, it's going to be 5 already, guys. I just started it. Okay. Right. बहुत है ना? तेरे काले काले नागिन से बाल रे, है ना? इधर ना? तो वैसे ही है. हिंदी बोलते में शब्द नहीं मैच करते, आइडिया मैच करता है. She has got dark brown hair. Okay. उसके घने नहीं काले भूरे बाल हैं. Right? Okay. Dark brown hair. She's got dark brown hair. Bolo, Vinay sir has got dark brown hair. Vinay sir has got white hair. Right. And she's quite pretty. She's quite pretty. She's quite ठीक ठाक सुंदर. She's quite pretty. ठीक ठाक सुंदर है. She's wearing boots. She's wearing boots. She's wearing boots. She's wearing boots. And a hat. And a hat. And a hat. And a red scarf. And a red scarf. And a red scarf. And she's jumping in the air. And she's jumping in the air. She looks really happy. Okay, मैं आपको ऑडियो फाइल शेयर कर देता हूँ in the group. आप सुनेंगे and बाकी को भी डिस्क्राइब करेंगे सुन के, सीख के. All right, it's easy. Just pay attention. Okay, fine. So let's wrap up for today because it's nearly 5. It's actually 5. And come to class, Sachit beta, tomorrow. Bye, everybody. Okay, sir. Bye-bye, beta.